for every one of you to give a confirmation or chat box कि क्या मेरा audio video is clear? Is my audio video clear? Is my audio video clear? Is my audio video clear? If it is clear, just write clear in a chat box. For every one of you to give a confirmation or chat. Waiting for you guys to give a confirmation or a chat box. Is my audio video clear? Good to see a lot of similar faces. Good to see a lot of new faces out. Welcome for the session, guys. Welcome for the session. Is my audio video clear? बता दीजिए आज यार, बता दीजिए please. Waiting for the confirmation. Zoom से everyone please note it down. बता दो यार, so that I'll get to know. Can you hear me out? Is my audio video clear? लिख दीजिए, लिख दीजिए. और जो वीडियो बंद करके बैठे हैं, ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए. किसी ने तो फन रात्रि का हमारा बैनर लगा दिया. आय हाय हाय, मजा आ गया देख के. चलो ग्रेट. अभी फन रात्रि नहीं है मेरे दोस्त, अभी हटा दो वो बैनर को. राइट. ओके, गॉट इट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. पीपल कैन हियर मी आउट. गोपाल राज कह रहे हैं नॉट क्लियर. गोपाल राज क्या हो गया भाई? गोपाल राज यूट्यूब से कह रहे हैं नॉट क्लियर. भाविन साहब कह रहे हैं क्लियर है. ओके, got it. Waiting for other confirmations on YouTube, then we'll start the session. But meanwhile, we'll just start and wanted to check one important thing, and that is key. Most of you are targeting for the statutory audit role. The discussion is for statutory audit. ठीक है. गलती से अगर भूले भटके दूसरे सेशन के पर्सपेक्टिव से आए हो तो you're in the wrong session. Today we'll be purely discussing about statutory audit. ठीक है. Now before we start, just wanted to know how many of you are joining for a first time, how many of you are joining for a second time, how many of you are regular joiners. If you are regular joiners, just write regular. If you are joining for a first time, just write first in the chat box. कितने लोग first time connect हो रहे हैं यार? कितने लोग first time connect हो रहे हैं? Just write first. If you are regular joiner, just write regular joiner. If you are second time joining, just write second time. अच्छा. Everyone is saying sir GR के students हैं हम आपके, बहुत बढ़िया. कोई कह रहा है सर पहली बार आए हैं. चलो कोई बात नहीं. जो रेगुलर आ रहे हैं, देखो यार, इसका मतलब ये नहीं है कि है ना, इसका मतलब ये है कि गलती से नहीं आए हैं. सेशन अच्छा ही होता है. तो रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू वेट टिल एंड. आई हैव सम स्मॉल सरप्राइजेस. आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ एवरीथिंग आउट. ओनली द थिंग यू नीड टू बी इज अटेंटिव. गॉट इट. जो फर्स्ट टाइम आए यार, आप तो सब्सक्राइब करिए चैनल को. ऐसा ना कहिए अखिल भाई, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. Perfectly fine. Great. So now before I start the session out, just wanted to request every one of you कि हम लोग थोड़ा सा Zoom chat के जगह है ना, will be also using the chat over the Telegram group है ना. तो because वहाँ पे जो दो ग्रुप्स बनाए हैं हमने डिस्कशन ग्रुप के, request you to have a chat over the discussion group only because it's easy for me to monitor this out है ना. और बाकी मेरे सामने Zoom यहाँ पे YouTube लाइव खुला हुआ है, तो YouTube लाइव और टेलीग्राम चैट दोनों हम लोग यूज करेंगे. तो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे यू विल बी पुटिंग ऑल योर थॉट्स एंड क्वेरीज आउट. तो रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप एंड वहाँ पे विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेरीज एंड द पॉइंट्स व्हिच आर देयर. गॉट इट सर, गॉट इट. ठीक है. तो जो यूट्यूब लाइव पे बैठे हैं उनके लिए भी मैं डिस्कशन लिंक को शेयर कर देता हूँ. ओके, मैं पिंग भी कर दिया है आपके लिए डिस्कशन ग्रुप. आप रिक्वेस्ट है कि आप सभी से फटाफट ज्वाइन हो जाए वहाँ पे. Okay, great. Before we start the session, just wanted to know from you guys, जो हमारे साथ connected हैं, आप जवाब दे सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में है ना. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम भी देखें जरा, और वहां पे हम पोल वोल भी कंडक्ट कर पाएंगे, तो दैट इज समथिंग इज अ ग्रेट फन. नाउ जस्ट वांटेड टू चेक व्हिच इज योर फेवरेट बिग फोर. व्हिच इज योर फेवरेट बिग फोर? जस्ट राइट इट ओवर अ डिस्कशन ग्रुप. आपका कौन सा फेवरेट बिग फोर है, जरा लिखिए चैट बॉक्स में, हम भी देखना चाहते हैं. Which is your favorite big four? Just wanted to see. Okay, okay. कुछ कह रहे हैं Deloitte, कुछ कह रहे हैं EY, कुछ कह रहे हैं Deloitte, कुछ कह रहे हैं EY, कुछ कह रहे हैं PwC. जो पैसा दे दे वो फेवरेट हो जाए, जो पैसा दे दे वो फेवरेट हो जाए. Okay, got it, got it. जोकर करके कोई है, समझ में नहीं आ रहा, किसी ने नाम रखा है जोकर. ओहो हो, इसका चेहरा देखें हम जरा. अरे जोकर भाई, नाम तो बदल लो, ऐसा ना करो यार. Okay. Which is your favorite big four? Which is your favorite big four? Just write it over a chat box. जो YouTube से कनेक्टेड है प्लीज लिख दीजिए. वेट कर रहा हूं मैं. EY, KPMG, Deloitte, EY, KPMG, Deloitte, PwC है ना. आपका कौन सा है? ओके, गॉट इट. सो at the end of the day, it doesn't matter which big four you are joining. What matters is that are you gonna be learning to the larger extent or not? Right? Learning is something which is the most important priority. आपका होना चाहिए. The most important priority is learnings. Okay, someone is saying अपना सपना money, right? Money भाई के लिए हम आए. That is what our end goal is. Got it, guys, got it. Now, very important
During this upcoming this session out, I'll be focusing on a lot of important things to crack the interviews for statutory audit. And I think I can guide you very well into this domain. The reason is quite simple. Since I have spent my 3 years of journey with ENY Pune office in statutory audit department. Hooray! Right. So I have spent my journey for 3 years in stat audit in Big Four. So I have seen how the processes are there. I have seen how the work culture is there. I have seen what all interview questions are there. And in fact, I have seen that what type of questions are going to be asked to you guys in interview. I hope everyone is excited for the interview questions and all this. And randomly, I'll ask some of the questions, especially to the people those who have kept their videos off. I'll randomly ask them to unmute and they are supposed to answer the interview questions, which I'll be asking them. They have two choices, either to leave a meeting or either to answer the question. Because that is what is there. And at least by the time we'll also be preparing for the interviews, right? It's at high time now we should start preparing for interviews. So red alert for the people those who are keeping their videos off. Oh my God, sir, डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ. समझा रहा हूँ. Video on कर लो. Okay, got it. This always works for me. Got it. Let's start the discussion. So first part I'll be discussing about very important, which is what stat audit is all about. Second, I'll be discussing on what are the roles you'll be getting in a part of a stat audit. Third, we'll be moving towards the discussion of technical questions. Fourth, how to find those Big Fours out and how to find out the top CA firms where you can apply for stat audit. And fifth, the last and conclusion, which is how to ensure that you clear all the interviews out of bonus trips. Okay. So first of all, very basic questions. What is statutory audit? What is statutory audit? Most of you must have been aware of, or most of you have done a stat audit. How many of you have done a stat audit in articleship? Just write me in a chat box, in the Zoom chat box, sorry, in the discussion forum. Just write me in a chat box. How many of you have done a stat audit? How many of you have done a stat audit? Those who have joined now, you write it down over a chat box or a Telegram group. How many of you have done articleship in a stat audit? Okay, Anchal is saying I have never ever done it. Okay, someone is saying vaccine. Okay, never done it. Few of you have done it. Few of you have not done it. Okay, okay. Waiting for others to write it down. Few of you have done it. Few of you have not done it. सीए मॉन्क में जॉब मिलेगी क्या सर? अच्छा, सीए मॉन्क में जॉब चाहिए मोहित भाई को. आ जाओ मोहित भाई, आ जाओ यार, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, आ जाओ. Mohit bhai is one of our mentors. He is also watching my session. Okay, got it. Great. Okay. Not much, but I have worked into the banking domains and stuff. Perfectly fine. Perfectly fine. Great. Now, very interesting and very interesting for the people, those who are want to be starting their career in stat audit. First, let me tell you what stat audit is all about and who should get into the statutory audit. But before I get into that, request every one of you to please carry pen and paper. Fatafat, because you are going to be making a hell lot of notes, you'll be requiring pen and paper. Fatafat jao, carry kar lo, those who are not carrying the same. Okay, got it. Let's start. So first question, sir, what is statutory audit? Very basic. The statutory audit is an audit which is required by law to just check the accuracy of a company's, to check whether the company's financial statements are as per the requirements or not. Now, what does generally a statutory auditor is going to be doing? It's going to be overviewing and looking the financial statements of a company. And basis on that, the statutory auditor is going to be giving the opinion. Okay. Now, what does financial statements include? It includes your P&L, it includes your balance sheet, it includes your cash flow, it includes your notes to accounts. Okay. So it's going to be reviewing all this, and based on which the auditor is going to be giving some of the opinions ki bhai, how the company is performing. Simple. Sir, this is, I know, sir, this is a rattafication. Bahut ratta mara hai, sir, audit mein. Sir, tell me who should join a stat audit. This is the most important question. Who should join a stat audit? Meanwhile, the people those who are connected request you to also make the notes so that you does not miss out any of the things, or you feel like, okay, this is something which is important for me, you can just definitely note it down. So second question, who should join a statutory audit domain? So statutory audit domain will give you an exposure for an audit. Statutory audit domain is going to be giving you somewhat exposure related to the IFC, which is a part of a controls, which is also one of the portion of internal audit. I'm saying a portion, not an internal audit. And third, the statutory audit is also going to be giving you some of the hints and the areas related to tax audits. Okay, overall, it's going to be giving you the picture of all the three areas which are there. Got it. Now, sir, this is something which I know, but tell me, sir, statutory audit is the right area to start with. I'll say statutory audit is going to be making you journalist. Okay. And it's going to be helping you to open the
avenues to get into multiple domains. Okay. जैसे कि from a stat audit you can easily move to the finance. From a stat audit you can easily move to the Fpna profile. So what is Fpna? Financial planning and analysis. I'll cover it in a separate session, but it's like planning side of a business. It's also open an avenue for FDD, financial due diligence के लिए. It's also going to be opening your avenues. It's also going to be opening an avenue for internal audit. Okay, so it's going to be opening up multiple avenues. It's not a niche profile. It's not a niche profile. It's going to be opening up avenue in multiple domains. Next, very important. Sir, if I don't know where to start with, or if I want some brand names in my CV, I have done an articleship from a mid-sized firm. Is a Big Four recommended for me? Or do you think that I should start my journey with a stat audit? The answer is yes, you can start your journey with a stat audit. If you want some of the brand names, or if you feel like नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से journey start करना, stat audit is going to be giving you a huge hint that you can start your journey with, because it opens an avenue into multiple domains. It opens the avenues into the multiple domains, right? So that is something which is there. Now, last thing about a stat audit. Number of vacancies, people often tend me out. The number of competition level, people tend me out, ask me कि sir कितना competition है, कैसे जाना है. But इसके साथ साथ the people those who love traveling can also join the stat audit which is there. Okay, the people those who love stat audit can also join the stat audit domain. Next question, which is stat audit is nowadays have been divided into two parts. Okay, stat audit have been divided into two parts. I'll present my screen so that people can enjoy the discussion, right? They can also see this out. Sir is using this, my favorite mind notes, and it's going to be helping you to build your thought process to the next level. Stat audit, I divided into Indian practice versus global practice. Okay, Indian practice versus global practice. I hope people are aware of Indian practice versus global practice. जिनको पता है सब मुंडी हिला सकते हैं सेशन में. हाँ. संदीप is like sir मुझे सब पता है. आप पूछते जाओ मुझे बस. Okay. So Indian per se practice versus global practice. So Indian practice, the companies, if I talk about the Big Four, especially EY, KPMG, Deloitte, and PwC. But if I talk about the global practices, it's going to be PwC, SDC, Deloitte USI, KGS, and EY GDS. These are the global practices which are there. Do you want me to cover whether I should go to the Indian practice or a global practice? If you want me to cover this out, just write yes in the chat box. Do you want me to cover whether I should go to the Indian practice or global practice? Just write yes in the chat box if you want me to do the same. If you don't want me to cover the same, just write no in the chat box. Waiting for you to give the confirmation. Waiting for you to give the confirmation. Do you want me to cover about Indian versus global? Do you want me to cover about Indian versus global? Do you want me to cover about Indian versus global? Okay, few of them are saying yes, few of them saying no. Okay. Covered yesterday only. Okay, covered yesterday only. Got it. No sir, आगे बढ़िए. Few of them are saying yes sir, please बताओ, please बताओ. Okay, got it. So what we can do is that we can cover the Indian versus global practices for the end part of our discussion, so that the people, those who know it very well, can skip this out, or the people, those who want to attend this out, can check at the end. The end may I'll talk about Indian versus global, which to join, when to join, where to go, when not to go. Sorted, not a problem. We'll be discussing Indian versus global at the end of the session. So that is also going to be ensuring that few people are going to be staying till the end of the session. Okay, got it. Perfectly fine. Next, moving to the very, very important question. Very, very important question. Guys, please do understand that whenever you're joining any of the statutory firm, or when you're joining any of the CA firm for a stat audit, the CA firms are going to be having and coming with the major areas which are there, or the domain, or there's also called as a subdivision. I also call it as a subdivision in a stat audit firms. Okay, which is like TMT area, IIC, and FS, not the TRS. TRS is something which is, again, we'll be having a detailed discussion on technology risk assurance services. But again, these are the three major side which is there, which you might find once you're joining a stat audit. Say, for example, if I got shortlisted in EY for EY Pune location, you need to check that whether I'm going to be plotted to TMT, IIC, or FS. Sir, why this is important? Because based on this, you'll be doing the type of work where you're going to be getting. Say, for example, if you're part of FS, you'll be mainly auditing the banks, you'll be mainly auditing the mutual fund houses, you'll be mainly auditing the NBFCs. If you don't like to audit banks, audit and NBFCs and all this, so please, whenever you're going to be choosing the stat audit, and if you're given a FS division, you can ask and negotiate for the same. Why can you please help me out to, or can you please shift me out to IIC or TMT? IIC is infrastructure, industrial, and consumer.
TMT is technology, media and telecommunications. People should be aware of this. Guys, please do understand, people don't know about this. Whenever I have seen that, if I see any of you are aware of IIC, TMT and FS, people are like, nahi sir, ye kya hota hai? We only know what stat audit is all about. Guys, please do understand, this is very, very important. Okay, so guys, you should be having a good idea about these three areas which are there. Again, nowadays Big Four might call it from different name, but this is what a generic names which you'll be able to find it out. Okay, so it's like a subdivision कि मैं कौन से clients पे किस type के clients पे काम करूंगा. Now moving to the most important part of the discussion, which is like interview prep. Sir, ये तो बता दो क्या prepare करना है. ये तो बता दीजिए कि what I am supposed to prepare. Right? I have prepared hell lot of questions which are there. Hell lot of questions, hell lot of discussions which we are going to be having in the while. So request every one of you to please pay attention, and I can also randomly throw questions to some of you guys. Since I have a huge time for the session, I'll ensure that at least we'll be prepared for some of the questions. The people, those who have kept their videos are off, they are on a red alert, might be asked the question first. Few basic HR questions, definitely you're going to be asked, right? Few basic HR questions. Where do you see yourself 5 years down the line? Introduce yourself, right? Why start audit? Why audit, right? Some basic HR questions are going to be there, which I'll be not covering, you know, which I've already told multiple times. Second is question related to the resume. Okay. If you have written that you have audited on some of the clients, right? They'll ask you, what were your major learnings, what you audited, how you audited and all this, blah, blah, blah. Let's move to the most important chart for a preparation, and that is a technical preparation. बहुत बड़ा chart है, trust me, बहुत बड़ा chart है. ठीक है. So I divided into the major parts, which is there. I want your attention, and also if you feel like you can note it down. First, majorly you should or you must or at least have started. This is the at least part. See, I'm not saying कि ये 100% है, but I'm saying that इतना भी prepare कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा. You'll be easily able to crack the interviews out. ठीक है, तो at least you should start preparing for this, but it is not the 100%. Okay, it's like a major ABC analysis में A portion बता रहा हूँ, which is there. आपको ABC बहुत ज़्यादा पसंद है, तो A portion, this is something which I'm covering, right? Okay, got it. Now first, standards on auditing pay, what all things you should be prepared and which standards you should have a good idea about. SA 210. SA 210. Anyone knows what is SA 210 in the chat box? किसी को पता है? Anyone knows SA 210 in a Telegram group? Please, you can write it down. What is SA 210? What is SA 210? बता दो, please. Waiting for the answers in the chat box. Yes, SA 210. Okay, SA 210 in a discussion group of our Telegram. बता दीजिए please. जो YouTube पे connected है, YouTube live chat पे बता सकते हो please. Waiting for you guys. You should have a good knowledge of SA 210. Agreeing the terms of engagement. They'll ask you the questions on the same. Next, very important, subsequent events. They'll give you a case study based on a subsequent events. They'll give you a case study based on a subsequent events. Okay. So case study based, they might ask you, or on subsequent events on SA 560, which is just something which is there. Next, upon types of opinion fixed question. Upon types of opinion fixed question. Like I'll give you a random example. Okay, let me find out some of the good faces to ask some of the case study based question. Okay, what are the types of opinion which auditor can issue? First question, what are the types of opinion that auditor can issue? I hope everyone knows this answer. I hope people knows this answer. Okay, right. If you know the answer, you can write it over the chat box as well. आप chat box में लिखते जाइए. Types of opinion. What are the types of opinion? इस बहाने preparation भी हो जाएगा. इस बहाने preparation भी हो जाएगा. फटाफट. Write it over a chat box, guys. Waiting for your answers. What are the types of opinions auditor can issue? What are the types of opinion auditors can issue? Easiest question. Easiest question. Okay, got it. Adverse opinion, qualified opinion, disclaimer. Okay. Modified and unmodified. देख रहे हो? Okay. So you should know how to present the answer, guys. You should know how to present the answer. Presentation is something which is very, 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 very important. I am getting a different answers. I don't know why. This is something which you should be preparing about the types of opinion. Next, very interesting question nowadays have been asking is that supposingly, you can write this case study. Supposing or suppose the company is facing a going concern issue. Suppose a company is facing a going concern issue. What type of opinion you're going to be issuing? Suppose a company is facing a going concern issue. कौन से type का opinion issue करोगे? Again, you need to be smart enough. You can ask again one more question to an interviewer regarding कि going concern issue है. But again,
यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी इंडस्ट्री में है, कौन से बिजनेसेस में है, व्हाट इज द पास्ट रेवेन्यू, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट व्हिच इज देयर, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल डिसाइड द टाइप ऑफ ओपिनियन एंड वेयर यू आर गोना बी, what type of opinion you're going to be issuing if there's a going concern issue. ठीक है, we can discuss the answers now, but if we start discussing the answers बहुत बड़ा session हो जाएगा. We can have a separate session on this where we'll have a practice for all this, but at least now let me cover major things out. जिनको answers पता है आप chat box पे answers डालते जाइए. जिसको answers पता है मैं chat box पे देखते जाता हूँ कि कौन है वो क्लास का टॉपर. Who is that? Who is he or she the topper of our class? संदीप इज एंजॉइंग सम स्नैक्स. संदीप अकेले अकेले कुछ नाश्ता पानी खा रहा है. संदीप गलत कर रहे हो तुम, भगवान देख रहे हैं, तुमने मुझे शेयर नहीं किया. क्या खाए संदीप तुम बताओ. जस्ट जोक्स ऑन अ लाइटर नोट. ओके, गॉट इट. यस, few people are mentioning about the types of opinions. Next, moving to standards on auditing. इतना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. एटलीस्ट पूरे एसेस रीड कर लो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, है ना. रीड करके जाओ, बट इतना तो बेसिक आना ही चाहिए, बेयर मिनिमम यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सेम. नेक्स्ट, moving to the next question, which is your favorite and interviewer's favorite. Your favorite and interviewer's favorite, which is the Ind AS. Ind AS, right? Ind AS is something where you will be expected favorite question, any company, any interview, any company, any interview, 115 fixed. Sir, I am from CA final old syllabus. Please go and read. Sir, I know Ind AS 115. Please again read. Because Ind AS is something which has been asked, is going to be asked, will be asked to you in every damn interview question. I don't know why people are very much focusing on Ind AS, but this is something which is there. Okay, now Ind AS 115 fixed questions which are there. Please do check this out. ये सब questions पूछे जा रहे हैं. You can note it down if you want. अगर आपको specific ही preparation करना है 115 में भी, इतना time नहीं है कि सर prepare क्या करूं, ठीक है, तो you can just go for a specific preparation. 5-step model fixed question. 5-step model fixed question. Anyone can speak 5-step model. मैं unmute करना चाहूंगा उस व्यक्ति को. कोई बोल सकता है 5-step model hand raise करके, मैं उसके लिए तालियां भी बजवाऊंगा. हैंड रेस कर सकते हो, वर्चुअल हैंड रेस. गो टू रिएक्शन एंड प्लीज अनम्यूट. ओके, गो टू रिएक्शंस, प्लीज रेज योर हैंड. शिवानी इज लाइक मैं बोल सकती हूँ सर, मैं बोल सकती हूँ, मैं टॉपर हूँ सर. ओके शिवानी प्लीज. नेशन वांट्स टू हियर. यस सर, इसके कोड है CPTAR. ओके ठीक है, तो बताओ पूरा. सर फर्स्ट हमें ना कॉन्ट्रैक्ट देखना है जो नहीं प्लीज गिव द आंसर्स इन इंग्लिश. इंटरव्यू इज अबाउट कम्युनिकेशन. First there should be contract between buyer and seller. Okay. P, performance obligation should be completed on time. Okay. If what is mentioned. Okay. T, transaction price. What are the transaction price? Got it. A, allocation of transaction price. Got it. Or last one is revenue recognition. Got it. Recognize the revenue. Perfectly fine, right? I hope she have said it correctly. अगर आप सही बुलाए तो आप हाँ बोल सकते हो, right? But I think यही है, if I am not wrong. यार जोरदार ताली है यार, जोरदार ताली है, round of applause यार, right? Great. है ना, तो really good to see this out. At least guys, please prepare this question out. Favorite question of an interviewer are gonna be asked in companies. Okay. जसपाल सिंह जी ने भी लिखा है यार चैट बॉक्स में. जसपाल सिंह जी, काफी अच्छा लगा आपने आंसर लिखा. मुझे ऐसी टाइप चाहिए यार, आप भी लिखते जाइए. बाकी लोग, मेरे को चाहिए टॉपर्स चाहिए मेरे को कुछ, राइट? ओके, गॉट इट. प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर लीजिए यार. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फेमस क्वेश्चंस nowadays have been asked regarding the discounting rate. How do you determine the discounting rate? आप discounting rate कैसे choose करोगे? तो that is also a second question which have been asked in a lot of interviews, which you should have a good knowledge about. Especially people targeting again IB side and this treasury side. This is again one of the question which you might be asked. How to determine a discounting rate? And discounting rate भी आप Ind AS के लिए कैसे निकालते हो? Anyone has any idea? Answers in a chat box. Anyone has any idea? Answers in a chat box. How do you determine the discounting rate? How do you determine the discounting rate? How do you determine the discounting rate? मैं देख रहा हूं कौन सबसे पहले आंसर करेगा. How do you determine the discounting rate? No idea. यश ने कह दिया no idea. Waiting for the toppers in the class. Someone is saying IRR. Someone is saying credit borrowing rate. Someone is saying again market borrowing rate. IRR method. IRR. Okay. Outflow. Ind AS 40 effective interest rate. Okay, great. IRR और बोरिंग रेट. देखो इस पे है ना, आपको फिर प्रोबिंग क्वेश्चन होगा, राइट? दीपक जी ने यूट्यूब लाइव चैट से आंसर दिया. दीपक जैन, दीपक, ओके, जतिन,
WACC प्लस प्रीमियम, ओके गॉट इट। IRR, देखो इतने सारे आंसर्स तो नहीं हो सकते इसमें, यू नीड टू आंसर इट ऑन अ स्ट्रेटेजिकली, है ना, कि किस तरीके से है। एंड इसमें एक इंडेस भी दिया हुआ है, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड दैट इंडेस की हाउ टू डिटरमाइन द डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो थोड़ा सा जस्ट ensure that you're giving a correct answer relating to same. Next, third question is again related to what are the methods of revenue recognition. Third question, you can note it down, methods of revenue recognition. Okay, third question which is regarding the methods of revenue recognition. ये चीज पे आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कौन जवाब दे सकता है। क्वेश्चन इज assertions covered while we are testing revenue. Fourth question is assertions covered while you are testing the revenue. Assertions covered while we are testing the revenue. किसी को पता है assertions covered while we are testing a revenue? Assertions covered while we are testing a revenue. कौन कौन से assertions impact होंगे when we are testing the revenue? Answers in a chat box. Waiting for the answers in a chat box. Waiting for the answers in a chat box. कौन कौन से assertions impact होंगे? कोई अनम्यूट करके कहना चाहता है। योगेश जी कहते हैं कि सर मैं बताऊंगा आज, मेरे को पूछ लो आप, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। यस योगेश जी बताइए। यस सर, सर जो assertions है revenue के regarding that are occurrence and cutoff procedure, ओके completeness, accuracy. ओके ठीक है, आपने assertions बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू विल आस्क यू हाउ यू विल एंश्योर द कट ऑफ फॉर रेवेन्यू। हाउ यू विल एंश्योर द कट ऑफ फॉर अ रेवेन्यू, बताओ इंटरव्यू क्वेश्चन। I will audit the year-end entry for specifically recorded income and expenses so that income earned in a particular year does not get recorded into the succeeding year, and the same with expenses. नो, मतलब नॉट कन्विंसिंग आंसर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ यू विल एंश्योर द कट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेवेन्यू। कट ऑफ प्रोसीजर कैसे चेक करोगे? कोई है जो बता सकता है? वर्चुअल हैंड रेज करिए। आई वांट टू सी, I want to see have some of the toppers in my class. How to ensure and check the cutoff procedure for revenue. Cutoff procedure कैसे चेक करोगे? Cutoff procedure कैसे चेक करोगे? वैष्णवी लाइक मैं बताऊंगी सर, मैं बताऊंगी। यस वैष्णवी बताओ। वैष्णवी प्लीज अनम्यूट इफ यू कैन डू द सेम, और विल गो टू दर्शिल। दर्शिल इज देयर। दर्शिल आप कर सकते हो तो आप करो। यस प्लीज। दर्शिल छुप के बैठे हैं, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। आदित्य, आदित्य बताइए, हाउ विल चेक द कट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेवेन्यू। आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? जोर से बोल लो। Hello, am I audible? You're audible. Yeah. To check the cutoff procedures, as an auditor, we would like to see transactions that happen during the close to the end of the year. Close to Like, end of the year. ठीक है, ये एक yeah. चीज किया। Second, Like, second. Second thing, we would focus on, for example, whether the revenues has been recognized appropriately or not, whether things which should not have been recognized are recognized as on 31st March. Okay, to some extent, okay. Others can share their answers in a chat box. Looking for their answers in a chat box. Yes, आप बताइए आगे। Okay. This is only नहीं the भाई, I am looking for the few specific words यार, समझो। Come on, come on, come on. Yes, looking for the good answers. Looking for the good answers. The Yes. rollback thing, can we say rollback thing? Rollback कितने दिन का? Sir, we will check. 15 days. 15 days. Okay. Next, I think someone is mentioning correctly. GST return भी देख सकते हो, 26 days भी देख सकते हो, और what else? Yes, वीरा बताओ। Lorry receipts, the goods are delivered or not. Goods deliver or not, मतलब you'll see the percentage of completion. That is what you meant. Yeah. Okay. What else? At the beginning receipts, STR, Outward register. outward registers, Okay. What LR else? registers, Okay. What and else? purchase orders is Sorry, bank statement. bank. Yes. What else? EWA bills. Yeah. We can check goods which are in transportation. Hmm. Whether Okay. they- Anyone else? Achha, I think I got very good answers in the chat box. I got very good answers in the chat box. Very good answers in the chat box. To ensure that revenue is recognized as per cutoff dates, I would
test the revenue for, I would test for revenue recognition at the beginning and at the end of the reporting period. Okay, got it. So first thing, you'll check the cutoff procedures. We'll see, say, for example, the cutoff is 31st March. You'll check the invoices before and after, first thing. Second thing, you'll check that proper outward is going to be done. Outward register, you'll check it out. Third, you'll also check, many times you also go for this, the bank balance, the amount received in a bank, you'll check this out, कि पैसा बैंक में आया है कि नहीं. And if the payment is received, you'll check that कि हाँ भाई outstanding created था कि नहीं. ठीक है. With this, you can also check multiple places like your returns or your e-way bills, or you can also check it out the last day's invoices which are there, right? And also the percentage of completions. अगर आप POCM और ये सब methods follow कर रहे हैं, तो that is time you'll be checking all those things out. But इसके लिए I want you to prepare the structurized answer, because this is one of the significant area of audit. मतलब revenue is one of the significant areas which is considered as significant areas. So they might ask you one of the question related to how you'll identify the significant accounts. The next question you can note it down. How can you identify the significant accounts? Okay, with also comes with one of the favorite question is that how you define the materiality. Audit में पढ़े हो materiality, इस पे practical questions आ सकता है, कैसे materiality निकालते हैं आप किसी भी चीज का. How do you calculate the materiality of the things out? Materiality is one of the again favorite question which interviews love to ask, and they might also ask you some of the basic journal entries for revenue recognition. People tend to confuse if the interviewer puts a GST in between. ठीक है, GST और TDS confuse मत होना if the interviewer puts a numbers of GST and TDS into the discussion out. ठीक है, that is what is there. Next, moving to second important question, 115 done. So 115 से इतना you should have a good knowledge of the same. Sir, please show the screen. Okay, yes, I will show the screen. Don't worry. ठीक है, I'll just present my screen. You can see this out. You can take the screenshot if you want. ठीक है, next. EPS calculation and this earning per share, they might ask you to calculate the basic and diluted earning per share. They might ask you what are the difference between basic and diluted EPS. I hope people know the basic difference between basic and diluted EPS. ठीक है, तो basic is something like कि अभी कितने outstanding है, and diluted is something like future में कितने आने वाले. तो that is something which is there. Again, you should be reading the index related to the same. Index 116 is again one of the favorite index. Anyone know what is index 116? पता है किसी को? What is index 116? Anyone in the house knows what is index 116? Leases, sir. It's a leases, sir. I know this, sir. It's index 116, which is leases. Okay. So leases, maybe they might ask you a lot of questions. So you should be aware of what is index 116. Leases pay. And also deferred tax asset, deferred tax liability. Favorite. Deferred tax DTL. When do you create DTA? When do you create DTL? DTA versus DTL. DTA versus DTL. भाई पूछा जाएगा. Please लिख लो, prepare कर लेना. Please लिख लो, prepare कर लेना. Okay, okay. Arush Goyal, तेजू, right? आपने फटाफट आंसर्स दिया है. Great, really happy to see this. वीडियो को आप लाइक भी तो कर दो यार, ऐसा ना करो. अब आए हो तो लाइक कर दो यार, दोस्तों तक पहुंच जाएगी यार वीडियो. ऐसा ना करिए, है ना. वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए यार, इतने सारे लोग कनेक्टेड है, राइट. फटाफट लाइक कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इंडेक्स 109. कोई काफी लोगों को 109 सुन के थोड़ा सा दिल की धड़कनें रुक गई उन लोग की. ये भी पूछा जाएगा. हाँ, इंडेक्स 109 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा बेसिक. अब जरूरी नहीं है कि पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाओ, बट बेसिक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्रीज एंड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इफ यू आर गोना बी गोइंग फॉर इंटरव्यू. 109 का डू नॉट वरी मच, बट एटलीस्ट हैव अ गुड ओवरव्यू ऑफ द सेम. ओके, व्हिच इज देयर. Next, this is something related to the Indias. Other Indias will be also asked, but these are the most important Indias which I have tried to speak about. ठीक है, तो ये चीज है. Moving to the case study base. आगे बढ़े. I hope everyone is able to understand this. यहाँ तक I hope people are with me. I hope everyone is enjoying the session. मजा आ रहा है तो enjoying लिख दो यार chat box में, ताकि हम आगे बढ़ पाए. If you are enjoying the session, just write enjoying in the chat box, please. If you are enjoying, just write enjoying the session in the chat box. Loving the session. चलो great. मजा आ गया सर, मजा आ गया. मजा आ गया सर. Okay, got it, got it, got it. चलो great. People are enjoying the session. Loving it. Mind blowing, sir. Okay, चलो great. Yes. Okay, great. Let's move ahead. Let's move ahead. People are enjoying the session. Will it be on YouTube? Yes, it will be on YouTube. But मुझे नहीं पता कितने टाइम तक रहेगा. 10-12 दिन तक रहेगा. Okay. Got it. Second question, case study base. Case study base. This is something which was given to a lot of students how to draft an MRL. I hope people know what is MRL, Management Representation Letter.
Can you please draft an MRL? Second, live case study, interviewer gave that. Can you please calculate the materiality? Can you please calculate the materiality? Or how do you calculate the materiality? The revenue of a company is 100 odd crore. Can you please tell me how to calculate the materiality? Okay, so that is something है ना, तो that is something which you should be knowing about materiality. Materiality के बारे में preparation is very very important. Audit opinion पे बहुत questions पूछ रहे हैं. Even if you are applying for internal audit role, type of auditor opinion is again very very important. ठीक है, type of internal opinions is very very important. Next, identification of significant accounts. Favorite question. How do you identify significant accounts? How do you identify significant accounts? भाई पढ़ के जाना. Trust me, this is going to be asked to you in interview. Next, how do you ensure that revenue is not fraudulent or occurred in real? है ना, तो checking that revenue is not incorrectly booked. ठीक है, तो this is something which you can check it out, and this is some of the answers which you can talk about. Third party confirmations, bank statements, three-way check. Anyone idea about what is three-way check? Three-way check, किसी को पता है what is three-way check? मुझे वो देखना है, उस टॉपर का नाम देखना है चैट बॉक्स में. Anyone have any idea? Anyone have any idea what is three-way check? किसी को पता है what is three-way check? Just wanted to see, looking for the answers in a chat box. Looking for the answers in a chat box. What is three-way match? लिख दीजिए आंसर. What is three-way match or what is? Okay, three-way check. Three-way check बहुत बार बोला जाता है. ओके ओके ग्रेट, मुझे एक सही आंसर मिल रहा है. मैं रुक रहा हूं और सही आंसर्स के लिए. यूट्यूब की जनता, मुझे आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं यार, कुछ तो लिख दो. थ्री-वे चेक. थ्री-वे चेक के बारे में लिखिए प्लीज. लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स. आई वांटेड टू सी द टॉपर ऑफ द क्लास. ओके 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 ग्रेट 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 ग्रेट. व्हाट इज थ्री-वे चेक? मैं देखना चाह रहा हूं. आई वांटेड टू सी व्हाट इज थ्री-वे चेक. Three-way check is invoice, PO and GRN. बहुत इंपॉर्टेंट. Invoice, PO and GRN. Three-way check. बहुत बार आपको three-way check के बारे में भी इंटरव्यू पूछ सकता है. ठीक है, तो जनरली इस चीज के बारे में यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज. ठीक है, इनवॉइस कब बनेगा, पीओ कब बनेगा और जीआरएन कब बनेगा. ठीक है, इनवॉइस, पीओ एंड जीआरएन शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज इफ यू आर गोइंग टू बी गोइंग टू दिस लेवल. ठीक है, if you want we can have a separate session and very detailed discussion session for 3 hours 4 hours on the same. सिर्फ स्टैट ऑडिट पे अगर आप चाहो तो मैं 4 घंटे का सेशन ले सकता हूँ विद डिस्कशन ऑफ आंसर्स, बट अभी 1 घंटे का सेशन है तो एटलीस्ट विल कवर दिस आउट. एट द एंड विल हैव अ डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम यू कि आपको डिटेल सेशन चाहिए क्या. ओके, आपसे फिर हम बात करेंगे. नेक्स्ट, यस सर, नुपुर कह रहे हैं प्लीज ले लो सेशन. रिया भी कह रही प्लीज ले लो सेशन. यस सर वी वांट इट. यस सर वी वांट इट. सेशन में ही पूरा प्रिपेयर करके भेज देंगे. जाओ फिर उसके बाद बोलेंगे जी लो अपनी जिंदगी. ओके सर, केवल ले लेंगे ले लेंगे. आप बस बोलिए आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए वो चीज ला लेंगे यार. टेंशन ना लो, बस आज सेशन एंजॉय कीजिए आप. नेक्स्ट, ई-वे बिल के बारे में प्लीज डू हैव अ डिटेल्ड रिसर्च. ई-वे बिल कब बनता है, अबाउट कितने अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल पे बनेगा. यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द सेम. ओके, व्हिच इज देयर. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एलआर एंड स्टैट ऑडिट. एलआर और स्टैट ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब दी फाइनलाइजेशन. ठीक है, एलआर और फाइनलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है. और वन मोर वेरी फेवरेट क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि till what time the companies need to submit the LR report to SEBI. Till what time the company need to submit the LR report to SEBI. I want your answers. I want your answers. कब तक के कंपनीज को LR रिपोर्ट SEBI को सबमिट करना पड़ता है. YouTube की जनता, आप गलत कर रहे हो, आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, मैं देख रहा हूं. कब तक के आपको LR रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है. क्या बात है, क्या बात है, गजब. 45 days, 45 days, गजब. That's a correct answer. That's a correct answer. आप जीतते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए. ठीक है, यस, 45 days इज अ करेक्ट आंसर. इंटरव्यू में पूछा गया था. नेक्स्ट, ये हो गया केस स्टडी बेस. इस पे भी और क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड टू कवर द मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच आर देयर. नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे हाउ विल यू ऑडिट, है ना. हाउ यू विल ऑडिट के अगर assertions. How you will audit legal expenses. Talk in terms of assertions. Favorite question. How will audit legal expenses? How will audit cash and bank? How will audit AR? How will audit AP? Talk in terms of assertions. I hope people are aware of assertions. Right? I hope people are aware of assertions. Next, talking to materiality. Materiality पे कौन से questions पूछे जा सकते हैं आपको? Which is first, what is materiality? Why it is important and how to calculate it? 3 questions on materiality पूछा जाएंगे आपको.
इसमें से दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, बट वी आर फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल टुडे, ठीक है? तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर. व्हाट इज मटेरियलिटी, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट दिस आउट, है ना? तो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कंट्रोल टेस्टिंग एंड आईएफसी के बारे में. दे विल अगेन आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज आईएफसी, what is IFC, or are you aware about the control testing, how it is important, how it is important, how it is important, ठीक है? Second, reporting requirements of IFC. What are the reporting requirements of IFC? Internal financial control होता है IFC. जिसको नहीं पता वो बता देता हूँ. IFC is a part of, again, auditor needs to do an IFC. Okay. And next, impact on reports if controls are not operated as per expected. Say for example, जो control procedures auditor को check करना होता है, if it is not working correctly, what is going to be impact on a report? That means here I am again asking you a case study based question where opinion पे क्या impact आएगा? What will be the impact on my opinion which is there? Okay, so that is something we should be aware of. Many people also called it as TOC, test of controls. Many people also called this as test of controls. TOC के नाम से जाना जाता है इसको. Or the number audit which you do is also called as test of detail, TOD. You can just note it down, jargon words. Interviewer might ask you, are you aware of TOC? Are you aware of TOD? Right? So that is something which is there. Next, moving to very interesting question. Audit procedure related mainly ये सब चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है. PPE. I hope you remember the Indes for PPE. किसको याद है जरा लिखिए Indes in a chat box. Indes related to PPE. मुझे देखना है कौन है वो व्यक्ति जिसको आता है. I am looking for the name. मुझे देखना है वो टॉपर. I wanted to see that topper. Index related to PPE. Index related to PPE कौन सा है बता दीजिए please. Okay, Index 16, perfectly fine. Index 16. शिवांगी ने सही कहा है. शिवांगी YouTube से कनेक्टेड है, सही कह रही है वो. Yes. नम्रता करेक्ट, शुभम करेक्ट, गजब. जतिन ने करेक्ट बोला है, सभी ने करेक्ट बोला है. ग्रेट. है तो PPE के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा. नेक्स्ट, इसमें वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डू यू यूज SLM मेथड, व्हेन डू यू यूज अ WDV मेथड? SLM versus WDV. Simple question. SLM versus WDV. SLM versus WDV. Okay. उसके बाद trade receivables पे और trade payables पे similar type of questions might be asked. How you will prepare the aging? Or they might give you live, ask you to open the Excel and prepare the aging. They might give you a base data to prepare the aging. They might give you a base data to prepare the aging report. Second, how do you decide the provision for doubtful debts? Favorite question. How do you decide the provision for doubtful debts? कैसे decide करेंगे? ठीक है, तो this is something which is gonna be there. Anyone would like to answer? Anyone would like to answer? How do you decide the provision for doubtful debts in a chat box? कैसे decide करते हैं कि कितना provision बनाना है for doubtful debts? कैसे decide करेंगे? How do you decide that? What is the provision for doubtful debts? How do you decide the provision for doubtful debts? Company policy to some extent. Okay. Next, कितना provision for doubtful debt बनाना है, कैसे decide करेंगे? Data analysis, past trend, Index 16, based on past expected bad debts. Okay, इसके लिए provision for doubtful debt के लिए aging is something very very important. हम aging देखते हैं, first thing. Second, payment terms देखेंगे. Third, past trend देखेंगे. Fourth, company का क्या policy है वो देखेंगे. Okay, and we'll perform some of the analytical procedures to decide कि कितना मेरा होना चाहिए. ठीक है, जनरली कंपनीज फिर एक कट ऑफ डेट डिसाइड करती है कि 90 डेज और मोर देन 180 डेज के आगे के हम लोग प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज देयर. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बैलेंस कंफर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. से फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सेंड अ बैलेंस कंफर्मेशन टू अ डेटर्स, फेवरेट क्वेश्चन, मैं इसके लिए किसी को अनम्यूट करूंगा, फिर से तैयार हो जाओ. से फॉर एग्जांपल, इफ अ बैलेंस कंफर्मेशन इज सेंड टू अ डेटर्स बट डेटर डिड नॉट रिप्लाई ऑन अ बैलेंस कंफर्मेशन. आपके पास 10 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ था. You have sent a balance confirmation. The people those who have kept their videos off are on a red alert. आपको ही पूछा जाएगा. ठीक है, मैंने बैलेंस कंफर्मेशन भेजा, डेटर्स को डेटर डिडंट रिप्लाई. आई होप यू रिमेंबर द ऐसे रिलेटेड टू बैलेंस कंफर्मेशन. आई होप रिलेट याद है. ऐसे 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 बताओ, जल्दी बताओ भाई, रिवीजन हो रहा है, जल्दी बताओ. ऐसे रिलेटेड टू बैलेंस कंफर्मेशन, मुझे देखना है वो टॉपर कौन है. क्या बात है, क्या बात है. भावना सबसे पहले लिख रही है यार, क्या बात है. भावना के हर आंसर पहले आ रहे हैं यार. भावना कहाँ है, इनको देखना है. अच्छा, भावना लाइक फटाफट. ओके ग्रेट. ठीक है, ऐसे रिलेटेड टू बैलेंस कंफर्मेशन लिख लिया आपने. नाउ
Since you are the auditor of a company, you have sent a balance confirmation for a debtor. ठीक है? Balance confirmation has not been received. What is the procedure you will perform to ensure that the balance outstanding is correct? What is the procedure you will perform to ensure that the balance confirmation is correct? I want any one of you to please raise the hand जिसे आंसर आता है और आंसर दे. कौन है वो चेहरा, कौन है वो व्यक्ति जो आंसर देना चाहता है? मुझे वो देखना है. I wanted to see some of the new faces again. राहुल. Yes, राहुल, बताइए. So you are not audible? Yes, you're perfectly audible, Rahul. So first thing we'll check whether the payment has been received subsequently after the balance sheet Subsequent date. receipts in a bank account, perfectly fine. Yeah. Second, Secondly would be to when the company is dealing with the debtor, they would have the experience whether the debtor is regularly paying or not. So you can check the past history and the past transactions. history and past history, payment track record and aging. Right. ठीक है, cover this And together. we can also check the subsequently whether any further sales has been made to the current debtor. Perfectly So that fine. Subsequent sales, perfectly fine. Okay, what else? that is what I would do in the first place. Okay, got it. Okay, someone is saying written representation. To some extent, that does also work out. Now, here one of the case study which was given by an interviewer to one of our student was, since the debtor is government. कोई हंसना मत please. ठीक है, and you know, government payments many a time is taking long time, right? Now the company is unable to receive the money, neither the company is going to be able to get the confirmation, plus also it's like on very much hold because of multiple things out. ठीक है, party was asking for a cut. To be honest, this was a case study which was given to one of the student. गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, some of the agents were asking for a cut कि भैया 20% दोगे तो पेमेंट रिलीज होगा, नहीं तो फिर जय श्री राम. ठीक है, बट द कंपनी वाज सो ऑनेस्ट, दे वर लाइक नहीं हम तो पैसा नहीं देंगे. व्हाई वी शुड गिव आवर शेयर ऑफ रेवेन्यू टू यू, एंड दैट इज व्हाई द पेमेंट वाज नॉट देयर. कंफर्मेशन रिप्लाई नहीं आ रहा था. सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस व्हाट नॉट देयर. ठीक है, एंड वी वर इन अ डाउट कि भाई कैसे मैं उसका चेक करूं कि डेटर आउटस्टैंडिंग है. पॉइंट नंबर 1. एंड सेकंड, हाउ फॉर वेदर आई शुड रिकॉग्नाइज एज अ डाउटफुल डेट्स और नॉट. Interview question case study given to one of our student. Can anyone think of answers in a chat box? क्या कोई सोच सकता है कि इसके लिए क्या आंसर दोगे इंटरव्यूअर को? Anyone can think of answers in a chat box. Anyone can think of answers in a chat box. Looking for the answers. मेरे को देखना है कि कौन इस बार सबसे पहले आंसर दे पाता है. At least आंसर दो, सोचो, give a thought process. Check the ledger when sale is recorded. ठीक है, केवल सेल तो रिकॉर्डेड है, कंपनी तो बोल ही रहा है. 2 क्वेश्चन. पहला, कैसे चेक करूं डेटर का अमाउंट सही है. दूसरा, हाउ विल आई एंश्योर दैट कि प्रोविजन क्रिएट करना है कि नहीं. 2 क्वेश्चन है इसमें, और करना है तो कितने अमाउंट का करना है. दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज व्हिच आर गोना बी देयर. परफेक्टली फाइन. योगेश ने सही बोला, मेरा दिल जीत लिया. एग्रीमेंट चेक कर लो विद द गवर्नमेंट. एग्रीमेंट से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा. परफेक्टली फाइन योगेश, वेरी गुड. योगेश कहाँ है? योगेश, काफी अच्छा लगा मुझे. सेकेंड, ई वे बिल भी आप देख सकते हो. बैलेंस कब से पेंडिंग है. एजिंग, ओके, एजिंग आपने देख लिया. एजिंग इज पेंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 year 2 years डाउन द लाइन. इनवॉइस वगैरह चेक कर लिया तो बैलेंस, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स, उससे आपको अमाउंट पे कंफर्मेशन मिल गया. सेकंड डाउट इज वेदर आई शुड मेक अ प्रोविजन और नॉट. सेकंड डाउट इज वेदर आई शुड मेक अ प्रोविजन और नॉट. कंपनी आपको बोल रही है कि देखो भैया वो 20% कट मांग रहा है, मैं 20% कट नहीं देना चाहता, 20% कट दूंगा, पेमेंट तुरंत आ जाएगा. ठीक है, whether I should recognize the provision or not. Being an auditor, what you will do? Being an auditor, management is saying will not make a provision. We'll fight a legal battle or all this. Cross check amount of with 20% amount. Acha. Cross check amount with 20%. Legal avenues available with auditee, depending on company's policy. Yes, as per the prudence, you are auditor. It's outstanding for a very long time. It's outstanding for a very long time. If central government's guarantee, then provision will create. Legal advice take. Create provision. Okay. Depends on how many days policy we go for a provision. Yes, one of the answers is this. Second, on a conservative side, you can also write it on your opinion that the amount is outstanding for very long, or something related to on a contingent part which is there. And many of the people also tend to forget one of the important concept between contingent liability, contingent asset, unbilled revenue, unbilled this
unbilled liability, unbilled revenue, है ना? तो these are the 4 important points which you should be aware of in the jargon words, which I was expecting in some of the answers to come. ठीक है, तो that is what is there. इस पे again is a subjective answer, no perfect answer, कोई सही आंसर नहीं है इस पे. Discussion with management पे भी डिपेंड करेगा, कंपनीज की पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा. But these are the questions which might be asked to you. I am giving you a hint to build a thought process. We'll have a detailed discussion if you want कि हाँ सर आप और डिटेल में डिस्कस करो, तो मैं मेंटर्स को भी बुलाऊंगा. We'll have a detailed discussion on answers as well. ठीक है, गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. लीगल एक्सपेंसेस, पेरोल, कैश एंड बैंक, इस सब पे भी आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज 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 प्रिपेयर फॉर द सेम. ठीक है. नेक्स्ट, कारो 2020 वर्सेस कारो 2016. 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 ठीक है, ये एक चीज पूछा जा सकता है. और उसके साथ साथ they'll also ask you whether the CARO is applicable for audit of consolidated financial statements. कोई बता सकता है इसका आंसर? Whether the CARO provision is going to be applicable for CFS. Whether the CARO provision is going to be applicable for CFS or not. Whether the CARO provision was applicable for CFS. बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Whether the CARO provision will be applicable for CFS or not. अयो अयो, कोई लोग कह रहे हैं नो, कोई लोग कह रहे हैं यस. ऐसे कैसे, इतना डेल्टा कैसे आ सकता है आंसर्स में? ढूंढिए आंसर, ढूंढिए. चाहिए तो आंसर हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, ये हो गया आपके बेसिक क्वेश्चन, टेक्निकल साइड हो गया. ठीक है, इतने मेजरली टेक्निकल है. देखिए, ऐसे रिलेटेड इंडिया केस स्टडी बेस, हाउ विल ऑडिट मटेरियलिटी टेस्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड, कारो रिलेटेड. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज देयर, दिस इज समथिंग विच इज देयर, है ना? राइट. तो आई होप यहां तक के पीपल आर एंजॉइंग दिस. आर यू enjoying the session of Stat Audit? Are you enjoying the session of Stat Audit? If you're enjoying, just write enjoying in the chat box. लिख दो प्लीज, enjoying in the chat box. रिप्लाई कर दो उस पे, हमें भी देखें यार, हमें भी अच्छा लगेगा. Are you enjoying the session? Okay, are you enjoying the session of Stat Audit? Are you enjoying this session of a Stat Audit? Please बता दीजिए, प्लीज 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 बता दीजिए. Are you enjoying the session of a Stat Audit? मजा आ रहा है? अरे बोलो ना, बोल भी दो. Are you enjoying guys? Wanted to see. आपको मजा आ रहा है कि यार बता दो. ऐसे हम हर एक डोमेन का कवर कर ले तो कैसा रहेगा? क्या कहते हो? क्या कहते हो? बता दो. हर एक डोमेन का कर ले क्या? बता दीजिए चैट बॉक्स में. अगला डोमेन कौन सा करना है ये भी बता दीजिए. बहुत मजा आएगा. और इसके साथ अगर आंसर का भी प्रिपरेशन कर दे 4-5 घंटे बैठ के तो खत्म ही हो जाएगा. कहाँ खुद से बैठ के करोगे? मुझे नहीं भरोसा है तुम पे. खुद से बैठ के तुम करते ही नहीं हो. हाँ, खुद से बैठ के करते ही नहीं हो, मुझे पता है ना? खुद से बैठ के तो यार मूवी देखने बैठ जाते हो, दोस्त का फोन आ गया तो वहीं लग गए, है ना? मैं तो सीए बन गई, तू भी सीए बन गया, राइट, है ना? तो क्या कहते हो बताइए, क्या कहते हो बताइए? कर लें, डिटेल सेशन ले लें एक, है ना? 5-6 घंटे का सेशन लेंगे, तगड़ा मजेदार, और उसमें पूरा पूरा कवर कर लेंगे, पूरा. ठीक है, यस. डीटी और टीपी का करवा दो. डीटी और टीपी की बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी. डीटी और टीपी की बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी. डीटी और टीपी की बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी, क्योंकि हमारा एक प्री प्लेसमेंट टॉक हो रहा है केपीएमजी का. प्री प्लेसमेंट टॉक करवा रहे हैं हम आप लोगों के लिए. हम पूरी मेहनत कर रहे हैं दिन रात बैठ के कि आपको अपनी ड्रीम कंपनीज तक पहुंचा दे. प्री प्लेसमेंट टॉक ऑफ केपीएमजी 12th of August 5 to 6 PM. अभी बैठ के रजिस्टर करेंगे सब. प्लीज 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 रजिस्टर कर लिए. सर मुझे टैक्सेशन में नहीं जाना. भाई एटलीस्ट आओ तो सही, समझो तो सही क्या होता है टैक्सेशन डोमेन में, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इट. अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए प्लीज. आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू रजिस्टर योरसेल्फ. गो टू mentorship.cmonk.com इवेंट्स पेज, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए. मैं चैट बॉक्स पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ. मैं चैट बॉक्स पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ. फटाफट रजिस्टर कर लीजिए.
मैं चाहता हूं कि आप आइए, पार्टनर से मिलिए, समझिए कि क्या हो रहा है, एंड दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट। फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड गाइस, फटाफट रेस कीजिए। ओके ओके, रजिस्टर कर लीजिए। आ जाइएगा, अपने दोस्त भाइयों को भी लेके आइए, है ना, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेटवर्किंग सेशन है यार, कितने सारे सीईओ से मिलोगे, इमेजिन कर लो। दोस्त बनोगे, दोस्ती से ही जॉब मिलती है, दोस्ती से ही जॉब मिलती है। तो फटाफट फटाफट इसके लिए भी रजिस्टर कर लो, फटाफट रजिस्टर कर लो यार। कोई सोचने की बात ही नहीं। मुझे पता है बाद में आप भूल जाते हो, बहुत लेजी हो गए हो आप लोग आजकल, ठीक है। क्या पता उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको जॉब की, क्या पता आपके दोस्त ने आपको रेफर कर दिया नेटवर्किंग सेशन में, ठीक है। ये वाला सेशन भी बहुत सही होगा, हाउ टू गेट अ पैकेज ऑफ 21 लाख एंड मोर, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा अपकमिंग डेज में आप ही के लिए। आपको ये पेज चेक करते रहना है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, प्लीज रजिस्टर कर लेना। ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी एंजॉयिंग ऑल दोस इवेंट्स, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा ये सब इवेंट्स में, ठीक है। रजिस्टर कर लिया तो एक बार रजिस्टर्ड लिख दो चैट बॉक्स में प्लीज। उनसे रजिस्टर्ड, जस्ट राइट रजिस्टर्ड इन चैट बॉक्स। सर कोई कह रहा है फॉरेंसिक का ले लो। 8th को कौन सा इवेंट है? 8th को बेटा शॉर्टलिस्टिंग होगा आईसीए कैंपस का, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कौन सी कंपनी चूज करना, कौन सी नहीं करना, राइट। विप्रो के लिए कुछ गाइड कर दो बेटा। विप्रो के लिए योगेश आप यूट्यूब पे सर्च करिए, सीए मॉन्क विप्रो इंटरव्यू प्रिपरेशंस, आपको मिल जाएगा वीडियो, उसमें आ जाएगा डिटेल डिस्कशन, ठीक है। आईडीटी का भी लेंगे, आईडीटी का भी लेंगे शीतल, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। 8th को दिल्ली में ओरिएंटेशन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाम को थोड़ी ओरिएंटेशन है, सुबह है ओरिएंटेशन यार। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रिपरेशन पे, राइट। वाई टू ज्वाइन अ बिग फोर, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। वाई यू वांट टू ज्वाइन अ बिग फोर, वाई यू वांट टू ज्वाइन अ बिग फोर, वाई यू वांट टू ज्वाइन केपीएमजी, वाई यू वांट टू ज्वाइन डेलॉयट, ये पूछा ही जाएगा। फिक्स क्वेश्चन, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस। नेक्स्ट, इसको आंसर कैसे करना वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आंसर कैसे करना वो भी सिखा देता हूँ, राइट। You are going to be talking about find out the awards and the all those things which company have received in the past। क्या awards मिले हैं, कंपनी का क्या ब्रांड वैल्यू है, वो सब देखो। हिस्ट्री ऑफ बिग फोर सर्च करो, जहां पे you will be searching about CFO, CEO, headquarters and number of offices in India। Very very important, please do search about CFO, CEOs, headquarters and number of offices in India। ढूंढ के जाना, इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? इसका पीडीएफ दे दो सर, मजा आ जाएगा सर, आपको दुआएं देंगे बेटा। संभव में मिलेगा, संभव में। संभव प्रोग्राम जो सीएमओ का एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा सर। संभव के बारे में बता देना, यस बता देंगे। नेक्स्ट, if you're going to be joining a global firms, if you're going to be joining a global firms, so they might also ask you कि sir why you want to join a global firm, why you don't want to join an Indian firm, why you don't want to join an Indian firm, why you want to join a global practices, this is something which is there, okay, they might ask you based on this। तो ये हो गया आपका why you want to join a big four, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लीज प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्सन टेस्ट, वर्सन टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना। वर्सन टेस्ट क्या होता है सर? वर्सन टेस्ट का लिंक देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जिसको वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने वर्सन टेस्ट लिया हुआ है। और जो हमारे जीआईआर के ट्रेनिंग वर्कशॉप के स्टूडेंट है, उन सबको वर्सन टेस्ट मैंने दिया हुआ है। अगर ट्रेनिंग वर्कशॉप में आते हो तो उसमें सब चीजें कराते हैं आपको, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द सेम, राइट। तो वर्सन टेस्ट इज नथिंग अबाउट अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट वेयर यू गोना बी टेस्टेड बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स एंड योर प्रेजेंटेशन skills। How do you listen? How do you speak? How do you communicate? These are the skills which is going to be tested by the company. Deloitte USA एक ऐसी कंपनी है जो वर्सन टेस्ट कंडक्ट करती है आफ्टर यू गोना बी शॉर्टलिस्टेड। सर प्रिपरेशन कैसे करें बेटा? प्रिपरेशन के लिए देखो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वर्सन टेस्ट की। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो वर्सन टेस्ट की, वो आप जाके कोर्स रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग वर्कशॉप में आते हो हमारे, तो उसमें ऑलरेडी आपको इंक्लूडेड रहता है एज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज वर्सन टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू इंश्योर दैट हेडफोन्स जो भी कनेक्ट करोगे, प्लीज कनेक्ट अ वायर्ड हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन्स मत कनेक्ट करना। सेकंड, सिट इन अ साइलेंट एनवायरनमेंट, सिट इन अ साइलेंट एनवायरनमेंट व्हिच इज देयर, साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठे रहना। नेक्स्ट, फ्यू अदर क्वेश्चंस, फ्यू लास्ट अदर क्वेश्चंस व्हिच आर देयर।
Are you okay for an outstation audit? Especially going to be asked in the Indian firms. Especially going to be asked on the Indian firms. Okay. And second, why you want to join audit? Why you want to join audit? These are the major questions which are there going to be asked to you if you're going to be targeting the audit role. सर अभी तक ने हमने क्या कवर किया? अभी तक के हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया कि भाई कौन से डोमेन में जाना, ऑडिट में कैसे जाना, ऑडिट में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑडिट किसके लिए बना हुआ है, एंड व्हाट आर द स्किल सेट. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दिखेगा कुछ नहीं इससे. ठीक है, इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. पीडीएफ कहाँ पे अपलोड होगा सर, वो बताओ. पीडीएफ बताओ कहाँ अपलोड होगा. इसका पीडीएफ अपलोड होगा बेटा संभव प्रोग्राम इज द प्लेसमेंट ड्राइव एक्सक्लूसिवली वी आर रनिंग फॉर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सीएमओ के प्लेसमेंट ड्राइव रन कर रहा है बाय द नेम ऑफ अ संभव एक प्लेसमेंट प्रोग्राम ड्राइव है विच वी आर रनिंग फॉर यू गाइज टू एंश्योर दैट यू गेट प्लेस टू द राइट कंपनीज. तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है संभव में, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रजिस्टर इट ओवर अ संभव प्रोग्राम. ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है प्लीज संभव में रजिस्टर कर लो, बिकॉज मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे, तो आप लिंक भी देख सकते हो, वहां पे आपको पिन कर दिया है लिंक, और ऑल्सो यूल बी एबल टू फाइंड इट ओवर द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन ऑन स्टैट ऑडिट इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो नाउ प्रो टिप्स के पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट व्हिच आई वांटेड टू टेल यू गाइस. ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स आर फीलिंग लाइक सर मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूं बट आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स. Many of you are feeling like सर मेरे में कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्प्रोवाइजेशन करना है, आई नीड समवन टू गाइड मी आउट, आई नीड के सर कोई मुझे हेल्प कर दे, राइट? तो हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप हैज बीन रनिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज एंड वी हैव कंप्लीटेड 27 बैचेस. 27th बैच अभी चल रही है. नेक्स्ट बैच 28th बैच इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of August एंड दिस इज अ लास्ट बैच फॉर द सीजन. ठीक है, ये लास्ट बैच है फॉर द सीजन जिसमें आपको डेली हम लोग रिगरस प्रैक्टिस करवाएंगे फॉर ऑल द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर इंटरव्यू. Day 1 resume building, Day 2 ग्रुप डिस्कशन, Day 3 PI, Day 4 which is related technicals, Day 5 domain wise selection, Day 6 mentors के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, Day 7 ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना. इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारे मेगा प्रिपरेशन बूट कैंप्स, एक्सक्लूसिव जॉब प्लेसमेंट्स, जॉब ओपनिंग्स and interview related stuff which are like version test, capstone projects which is a live industry assignment. हर वो चीज which is needed to get and crack interviews out are going to be covered here. ठीक है, previously we have completed in this season 5 batches complete हो गई है and you can take the feedback from any of the students. काफी सारे students यहाँ पे भी है, just they are attending the session to see that. Okay, तो which is there. Plus इसके साथ साथ हमारा डेली डाउट सॉल्विंग सेशन होता है from 2 to 3. तो exclusively for GI students, कोई भी डाउट हो आ जाओ सेशन में, we'll solve it out. This is a benefit of joining a GI session. जो भी इंटरेस्टेड है 8 से बैच स्टार्ट हो रही है, ज्यादा सोचिए मत, आप रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए भी. सो उसका लिंक कहाँ मिलेगा बेटा? उसका लिंक आप वेबसाइट पे जाओगे, वेरी सिंपल. द टाइम यू गो टू CMONK वेबसाइट cmonk.com, क्लिक ऑन प्लेसमेंट टैब. प्लेसमेंट टैब में आप क्लिक करोगे तो लाइव वर्कशॉप पे जाओगे तो वहां पे मिलेगा. डोमेन स्पेसिफिक आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट भी मिलते हैं विच इज आई कॉल्ड एज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. अगर आप GR वर्कशॉप ज्वाइन करते हो तो उसमें वो इंक्लूडेड है. स्टैट ऑडिट का आपको कैपस्टोन मिलेगा जिसके इसके पूरे आंसर्स, मेंटर्स के साथ गाइडेंस, प्लस आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज भी मिलती है. प्लस यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटर आउट. ठीक है, तो जिनको पर्सनल मेंटर भी चाहिए होता है फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये पर्सनल मेंटर आपको मिलता है इन अ पार्ट ऑफ अ GR करिकुलम. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ GR. यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है फॉर योर CV, रेज्यूम रिव्यू एंड गाइडेंस आउट. ठीक है, तो ये चीज के बारे में मुझे ब्रीफ करना था टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स GR वर्कशॉप. लास्ट थिंग बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, इंडियन वर्सेस ग्लोबल का डिफरेंस तो मैं बताऊंगा, बट उसके पहले एक और चीज मुझे बताना है आप सभी को, है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, है ना. द लास्ट थिंग विच इज दैट गाइस, एक चीज समझ लो, कैंपस शॉर्टलिस्टिंग इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of August. ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग हैज बीन डन, यू नीड ऑल्सो टू बी प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपनी स्पेसिफिक, है ना. आपको कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स फ्रॉम ऑफ कैंपस. ओके, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि आपको कौन से जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट करना है. आई विल से दैट पीपल ऑलवेज टेंड टू रन टुवर्ड्स मनी के तरफ मत दौड़ो अभी. Just see and decide the domain and areas where you feel like, हाँ, this is what my area of interest is, and then do a research, find a mentors, and then join that domain. Because once you join it, you're going to be spending at least 1 or 2 odd years there. Okay, so that is something which you should keep in mind before you're joining any of the domains. Now, coming to the last part of our session, which is Indian versus global firms.
Indian versus global firms. Okay, the people can note down the differences, or I can use the same chart so that people can easily understand this out. First, based on Indian versus global clients. For Indian firms, mainly you're going to be dealing with Indian clients. For global firms, you'll be dealing with the global clients. So clients can be in US, UK, Germany, Philippines, Malaysia, Indonesia, all those countries which are there. Okay, so clients can be from different parts of India, other than India, global firms. Second, if I talk about the exposure, in terms of Indian firms, the exposure will be a bit higher because since you're going to be interacting with the client, you're going to be visiting the client as well. That is, the exposure is higher. But in global firms, exposure is going to be average, or it's up to the mark, because you're not going to be visiting the client, but you're going to be connecting over a phone call or a Zoom call. Okay, but that doesn't mean that it's not good. It's like that you're not just visiting a client, you're doing on a virtual basis. Okay, that is something also in good front. You will be improving your communication skills, presentation skills as well. Okay, so that is what is there. I'll be very honest, please do not feel disheartened, or that is something which is there. Okay. Third, talking in terms of learnings will be similar in both the companies, because in global firms you'll get a different sort of learnings, like you'll be working more towards communication, your presentation, your thought process building, your brainstorming, and all this will be much more higher as compared to the Indian firms. But in Indian firms, you'll also auditing some of the significant accounts. But in global firms, there are chances that you might not get significant account initially. They'll be auditing on a local EY. So for example, if you're doing an audit of some of the global firms, you'll be auditing and working and coordinating with the global clients of that Big Four, plus also the global companies out. Okay. Next, talking about work-life balance in Indian companies, Indian Big Fours will be more or less bit less as compared to the global firms. Means global firms will be offering you a good, better work-life balance as compared to the Indian firms out. Got it. Next, coming in terms of growth. Right, the growth is there in both the firms out. That's not a problem. But again, one thing is there, that in global firms, you can switch easily to the pool of global firms. Switching to some of the firms might be difficult because you have not audited the significant accounts or which is there. But it's purely depending on how you're interacting with the client. It's purely depending on how you're interacting with the client in a global firms out. But in Indian firms, you can easily switch to the multiple domains, which I've mentioned it out at the start of a session. You can switch to finance, FDD, internal audit, your startups. You can also become a director and partners which are there. Global firms gives with a good opportunity that you might go to the secondment or future. Global firms might offer you some of the secondments, and Indian firm also offer you secondments. But global firms, initially, it's easier to present that you worked on some foreign clients. So you can move to some of the foreign countries on a future date. Next, in terms of a package. In terms of a package, the global firms might offer you a higher package as compared to the Indian firms, because global firms earns in dollars, spends in rupees. Okay, so spending an amount in rupees is again going to be easier for them, so they pay higher package as compared to the Indian firms which are there. Moving to the last part about the global versus Indian firms, which is the number of vacancies and the interview preparation level. More or less, the preparation level will be the same in Indian versus global firms, but only the global firms will also come with a communication test. Global firms will also come with a communication test, which is there. The global firms will also look for the good communication part, which you should be having. This is what about a global versus Indian firm, which I want you to understand. And this is what was a session related to the statutory audit domain. I think we tried to cover all the things in the 1 hour of session. I hope you are happy with the session. If you feel like यार आपको मजा आ गया, तो आप कुछ तो लिख दीजिए सेशन के बारे में जो चैट बॉक्स हम पढ़ना चाहेंगे. Just write something in a chat box. We'll be really happy to read it out. I hope आपको मजा आया होगा. कुछ तो लिख दीजिए सेशन के बारे में, हम भी पढ़ें. और आप ये भी बताइए कि आपको और कौन से सेशंस चाहिए. अपने दोस्तों तक ये चीज पहुंचा दीजिए प्लीज. अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए. राइट, अपने दोस्तों तक ये चीज पहुंचा दीजिए. आई होप अगर आपको सेशन मजा आया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज. ऐसा ना कीजिए, हमें भी यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार. इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं, राइट, एंड ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच आर देयर कि यार 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सेशन को लाइक किया, हमें भी एक जुनून हो जाएगा
यार एक हमारा सपना है कि 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी वीडियो को लाइक कर देते, एक अलग ही मजा होगा यार, है ना। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जो कनेक्टेड है व्हिच इज देयर, और जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको सेशन अच्छा लगा है प्लीज कुछ लिख दीजिए आपके सेशन के बारे में, विल बी रियली हैप्पी टू सी दिस आउट। इसके साथ साथ जो भी हमारे अपकमिंग फ्यूचर में इवेंट्स हो रहे हैं प्लीज उसके लिए रजिस्टर करिए। कल हमारा किस चीज के लिए इवेंट है वो भी मैं बता देता हूँ। कल हमारा एक बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है which is related to guidance from CA final rankers for November 22 एग्जाम्स which is there। तो आपके दोस्त भाई जो भी होंगे जो पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्टर करवा लो। और उसके बाद 7th को which is on Sunday if I'm not wrong we'll have a very good session on networking। ट्रस्ट मी उस दिन आपको एटलीस्ट 5 से 6 जॉब ऑफर दिलवा दूंगा मैं। 5 से 6 जॉब ऑफर मिल जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिसको जॉब ऑफर चाहिए होगा नेटवर्किंग सेशन में आ जाना। मार्क माय वर्ड्स, 5 से 6 जॉब ऑफर्स मिल जाएंगे आपको उसी दिन, ठीक है। इशिता कह रही है सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, आपके जीआर के स्टूडेंट है। यस थैंक यू इशिता, राइट। और भी हमारे से सेशन होते रहेंगे, और ट्रेडिंग वर्कशॉप के लिए आपको आना है तो 8 अगस्त से लास्ट बैच चालू हो रही है, सोचिए मत, रजिस्टर कर लीजिए उसके लिए भी। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, डिस्कशन ग्रुप में आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट सेशन हम कोशिश करेंगे इंटरनल ऑडिट पे लेके आए। कोई कह रहा है सर इंटरनल ऑडिट पे लेके आओ, तो आप बता दीजिएगा किस पे लाना है, हम कोशिश करेंगे उस चीज पे सेशन लेके आए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज एंड स्टे सेफ।